Okay, student. So this is lecture 12, and in this lecture, we are going to discuss about the stability and reliability. Okay, okay, whether your system is stable and reliable or not. Okay, so reliability nothing else कि कोई हमारा टास्क है, कोई सिस्टम है, उसके कंप्लीट होने के सिस्टम मींस डिजायर्ड आउटपुट मिलने के जो चांसेस है वो वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. सो व्हेन यू लर्न अबाउट द कंट्रोल सिस्टम, जब आप कंट्रोल सिस्टम नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि और सिस्टम जो इज स्टेबल और अनस्टेबल, और यू कैन से जो सिस्टम है वो स्टेबल एंड रिलायबल है कि नहीं है. Okay, so in this property, we have to find out whether your system is stable और अनस्टेबल. सिस्टम स्टेबल होगा तभी हम कह सकते हैं वो रिलायबल है. ओके, रिलायबल मीन्स कि जो आप डिजाइन करने जा रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर योर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल. So if I talk about the, because we have to focus on this parameter. So if I talk about the stability, so most of you know the condition of stability, okay, because आपने starting में mathematics में पढ़ा होगा. So LSI system, okay, LSI system, linear shift invariant system. Okay, so LSI system is said to be stable if it follows bounded input, bounded output, or in short form BIBO. Okay, means if you want to mathematically represent this condition, mod of xt should be any value bx that should be between the mod of and infinite. Okay, so this value should be between these two for all t. Then जो आपका आउटपुट है वो भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए. सो लेट्स सी, दिस इज b by. Okay, so if your input is bounded, your output should be bounded. Okay, so this is the basic definition of stability if you want to represent it in mathematical. Otherwise, theoretical in definition form, if you are taking any input और जो इनपुट है वो बाउंडेड है, वो फाइनाइट है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो आउटपुट भी आपका फाइनाइट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने इनपुट तो फाइनाइट है बट आउटपुट इनफाइनाइट हो गया. सो उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल नहीं होगा. ओके, stability plays a main role, okay, whenever you are going to design your system. Okay, for example, अगर आप example लेते हैं, suppose you are going to design a motor. ठीक है, सो मोटर डिजाइन करने के लिए पहली कंडीशन ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, मोटर स्टेबल होना चाहिए. स्टेबल इन द सेंस कि जैसे आपने स्टार्ट की, आफ्टर सम टाइम जो उसकी स्पीड है, लेट्स सी यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द मोटर, वो स्टेबल होनी चाहिए कि एक पोजीशन पे जाके धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल पे जाके वो स्पीड मेंटेन बनी रहे. अगर वो स्टेबल नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन कि आपने स्टार्ट की, मोटर रोटेट करना स्टार्ट की और धीरे धीरे स्पीड बढ़ती गई और वो इंक्रीजिंगली बढ़ती ही जा रही है अगर वो स्टेबल नहीं है. सो एक मोमेंट क्या आएगा कि आपका जो मोटर है वो डैमेज हो जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वो स्टेबल ही नहीं है.
सो सिस्टम कोई भी हो, इट शुड बी स्टेबल, अदरवाइज आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका एग्जिस्टेंस तो होगा बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। जो एप्लीकेशन आप डिजाइन करने जा रहे हैं उसके लिए, उससे वो फुलफिल ही नहीं होगा जो आपका एप्लीकेशन है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। सो स्टेबिलिटी प्लेज अ मेन इंपॉर्टेंट रोल for designing in the system. Now, this is a mathematical definition. Now, just take one example. Okay, कि न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से आपके इस स्टेबिलिटी के प्रॉपर्टी के लिए, जो आपकी सिस्टम की प्रॉपर्टी उस पर बेस कैसे आएगी। लेट्स सी यू आर टेकिंग दी yt equal to e to the power minus 2 mod t. Okay, you have to find out whether this system is stable or not. Okay, or you can write it down stable or unstable. So if I talk about the your solution of this particular question. Okay, so you know definition, all of you know. So if you're taking yt equal to e to the power minus 2t, okay, and that is varying from t to infinity. Okay, जो t है it is varying from 0 to infinity in one condition, and in another condition e to the power 2t अगर लेते हैं आप, okay, तो obviously it will vary minus infinity to 0. Okay, because you are taking the mod of t. Okay, so mod of means you have to consider from 0 to infinity and minus infinity to 0, both the side. Okay, so let's see. This is yt. Okay, minus infinity to infinity x of t dt. Okay, one thing I missed over here, the इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए if you are considering this yt should be finite, so for that you can also write this yt should be integrating minus infinity to infinity mod of xt dt should be less than infinity. Okay, so same condition we will apply here. So we are integrating your yt minus infinity to infinity xt dt. Okay, you have to put the value of xt over here. So xt की अगर हम बात करें, so आप देख सकते हैं we have 2xt over here. So हम दोनों को कंसीडर करेंगे। पहला हम ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 e to the power 2t dt प्लस नेक्स्ट वन इज द दिस वन 0 टू इन्फिनिटी जा रहा और यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस 2t dt. Okay, we are considering why this minus infinity to 0 or 0 to infinity, because in question it is given e to the power minus 2 mod of t. Okay, so we have to consider both the side. Now simply you have to take the integration of these two. So I hope all of you know the integration of this e to the power 2t upon 2, that is going from minus infinity to 0 plus e to the power minus 2t upon minus 2, it is going 0 to infinity. Okay, so or you can write it down, obviously 1 by 2 you can take the common e to the power minus e to the power minus infinity. Okay, you can take minus 1 by 2 common e to the power minus infinity minus e to the power 0. Okay, so all of you know e to the power infinity is infinity, e to the power minus infinity is 0, and e to the power 0 1. So you can write it down in this form. The 1 e to the power minus infinity is 0, minus 1 by 2 e to the power minus infinity is 0, minus. From here 1 by 2
you can take common 1 plus 1 equal to 1, and that is less than infinity. And obviously if this is infinity, you can say the system is stable. Okay, so in overall question you have to find out the whatever is given, you have to find out this value e to the power sorry y of t. And y of t कैसे कैलकुलेट करना, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी डी टी लेस देन इंफिनिटी. Okay, this condition is valid if your xt is bounded. Okay, because you have to prove if xt is bounded, yt should be or yt must be bounded. Okay, for must be bounded means you have to calculate the value of yt and it must be less than infinity. उसकी एक value कोई मिलना चाहिए. So you can see over here you have started the question considering the mod of t over here. So you have considered both the limit minus infinity to 0, 0 to infinity, put this value, solve the yt, and if yt is coming the less than infinity means obviously it is finite, then your system will be stable. So this is the way you have to solve this type of problems. Okay, so this is about your stability and reliability. Okay.